Very good afternoon, dear students. I am Dipanshu Jain, and today I will teach you the chapter India and its position from our NCERT textbook. I hope, students, you are studying very well in this difficult time of lockdown and also maintaining good health of you and your family. And I wish also a very prosperous and healthy future to all of you. And I wish we all will be together in our physical classes very soon, right? So let us start the chapter India and the location, and please keep your NCERT book with yourself while studying this video because we have some figures and graphs which are given in our NCERT book, right? If you don't have NCERT book, then you can open in your ePathshala app or any other app, and you can download and you can also download it from the official site of NCERT in PDF form, right? So I am starting with the chapter India, size and location. सो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया एंड द इंडिया, इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन। एंड आफ्टर दैट इंडिया के क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे, हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये सब हमारी ज्योग्राफी की बुक में इस बार आएगा। बेसिकली इंडिया का जो साइज़ है वो आपको सब बच्चों को लगभग पता होगा कि अबाउट 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का। मीन्स जितना भी पूरे लैंड में पूरे वर्ल्ड सॉरी जितना भी पूरे वर्ल्ड में लैंड है उसका इंडिया के पास 2.4% है, और इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय द साइज है इन आवर वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, प्लीज़ नोट डाउन कि इंडिया के पास कितना लैंड है, 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल लैंड इन द वर्ल्ड, एंड its position is seventh in terms of land in the world. Clear? So आप सभी को ये पता है कि इंडिया की सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी रही है। इट हैज़ अ वास्ट वास्ट एशियंट सिविलाइजेशन एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। And after our independence from 1970s, we have seen very vast development in our country, like green revolution, white revolution. You must have heard about them in your previous classes about the green revolution and white revolution. Green revolution basically concerns about the farming industry, and white revolution basically concerns about the dairy industry, राइट। सो डिफ़िकल्ट टाइम्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे पास रिसोर्सेज रिच थी हमारी कंट्री, बट कुछ टाइम बिंग वी कांट यूटिलाइज देम वेरी वेल। एंड आफ्टर 70s and 80s our country start growing at a very good rate, and from last 20 or especially 30 years you have seen very much changes in our country, and in terms of technology and society too, right? So it has moved forward displaying remarkable I'm just reading the some few lines from your NCERT textbook, from our NCERT textbook. It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. As I already said, that our country has make a remarkable step in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. And India has also contributed significantly to the making of world history. And in current times, as you are seeing that our country emerges as a world leader in these difficult times of lockdown by guiding lockdown and by controlling the cases of COVID-19 disease, and also providing medicines to the many countries who need at this difficult time. This shows that this shows the position of our country in today times. So we are basically in this chapter we are just concerning about the
we will study about the location and size of our country, of our respected country, our great country, that is India. India is a very vast country, as you know. In the terms of population, our country stands second in the whole world after China. The first is China, and then comes the India. Approx 130 crores people are living in India at present, and lying entirely in the northern hemisphere. Our country lies entirely in the northern hemisphere, ranging from 8 degree 4 minutes north, 8 degree 4 minutes north, the southmost point of the country, to 37 degree 6 minutes north, the uppermost, or you can say the northmost or the topmost point of our country. The southmost point is, students, 8 degree 4 minute north, 8 degree 4 minute north. It is just between the north because our country lies entirely in the northern hemisphere. You can see in the figure 1.1 of your NCERT textbook. And the clear, students, the northernmost point is 37 degree 6 minutes north, and the southmost point, or you can say the lowest southmost point, and the groundest lowest point, topmost point is uh, 8 degree, sorry, 37 degree 6 minutes north, and the southmost point is 8 degree 4 minutes north. And it is the latitude, it is the latitude position, and longitude positions are 68 degrees 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. 68 7 degree east means the top west point of our country, and 97 degree 25 minutes east means top east point of our country. This you can see the one important point, that latitude points both are north, and longitude point both are east, because it is of a reason. The main reason behind this is that our country lies entirely in the northern hemisphere. So the northmost point of our country is, northmost point means top point of our country is 37 degrees 6 minutes north, and southmost or lowest point of our country, downmost point of our country is 8 degree 4 minutes north. And the western point of our country is 68 degrees 7 minutes east, and the top, and then the east point of our country, starting east point of our country, is 97 degree 25 minutes east. I hope that this is clear to us, this is clear to all of you. If you have any doubt in this, you can see the figure, and after that you can call me or text me, right, students? Now, after that, the Tropic of Cancer, which divides our country into two equal halves. The Tropic of Cancer passes through 23 degree 30 minutes north, and it divides the country almost into two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Means in the southeast of our mainland, there is Andaman and Nicobar Islands, and in the southwest of our mainland lies the Lakshadweep Island in the Bay of in the Arabian Sea respectively. Means, where is Lakshadweep Islands? In the southwest of our country in Arabian Sea. And where is Andaman and Nicobar Islands? South east of our country in the Bay of Bengal. Means Andaman and Nicobar Islands are towards the Kerala side, you can say that, and
Andaman and Nicobar Islands are in the side of Odisha, and Lakshadweep Islands are in the sides of Kerala or Maharashtra side. You can say, and you can understand by this point: south, east, and southwest. Southeast Andaman Nicobar, southwest Lakshadweep, Andaman in the Bay of Bengal, and Lakshadweep in the Arabian Sea, respectively. Right, students? And you can also see in your map of world also, or map of India. And do you know that the southernmost point of the Indian Union, that is the India, is the Indira Point, which got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. It lies near Kanyakumari, and it is in between the sea. So after the position, this is the position of our country in the globe, on the globe, in the world map. What is the position of our country in the terms of longitudes and latitudes? Right, students? I hope you are uh, cleared with this subject in this point. Now, now we will talk about the size of our country, कि कितना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं अपने लैंड के अकॉर्डिंग. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. 3.28 million square kilometer. It is the area of our country. India's total area accounts about, as I earlier said, about 2.4% of the total geographical area of the world. Now, if you see in your NCERT textbook in figure 1.2, it is clear that it is a graph. Basically, figure 1.2 is the graph of the countries having the largest area in square kilometer, and on the top, students, Russia having 17.09 million square kilometer is on the top of this graph, and India is on the 7th position, acquiring about 3.28 million square kilometer. Right, students? But generally, which covers 2.4% of the total area of the world. Russia being on the top with approx 7.09 million square kilometer. USA stands on third, Canada on second, China on fourth, Brazil on fifth, and Australia on sixth, and on seventh India is present. You can see in your figure 1.2, which is the data given by the United Nations Demographic Year book. Right, students? It is just given in your NCERT book. You can easily see in the book. Now, the one thing more, India is the seventh largest country of the world in terms of land. India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is approx 7516.6 kilometer. Means it is 7,516.6 kilometer. Coastline, you can easily understand the land adjoining the sea, that is our coastline, and it also includes the coastline of Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands also. And land boundary about 15,000. Land boundary is that boundary which is not covered by the sea. India is also bounded by the Jungfold Mountains in the northwest, north, and northeast. In also northwest, students, you can easily say northwest mountains and north and northeast. In north there is a Himalaya range, and northeast it also covers Himalaya range. Some of south of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and on the west, Arabian Sea on the west coast of India, and Bay of Bengal on its east coast, basically named after the Bengal region. बंगाल रीजन के पास जो सी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बे ऑफ बंगाल. और अरेबियन सी का नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि इसके अरेबियन सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस तरफ अरब कंट्रीज हैं,
तो इसलिए इसका नाम बच्चों अरेबियन सी रखा गया है। Look at figure 1.3 now. When we look at the figure 1.3, it shows the positions of our country clearly. The longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 degree, because the topmost, I said earlier, what is the topmost point? Please remember, topmost point 37 degree 6 minutes north, and southmost point 8 degree 4 minutes east. So the difference between them is approx 30 degree, 30 degree, which is the point that it is very large boundary line. And in the terms of, in the terms of latitude, and in the terms of longitude, it comes about the western point 68 degrees 7 minutes east, and topmost point is 97 degree 25 minutes east. So also here the difference is of about 29 degree, which said that we are both equally divided. The coastline in the south comes to be 2993 kilometer from the Gujarat to, you can say, Arunachal. The Gujarat 68 degree 7 minutes lies in the Gujarat, and 97 degree 25 minutes lies in Arunachal, and the difference between them, difference between these 2 points is approx 22933 kilometer, and 37 degree 6 minutes and 8 degree 4 minutes approximately comes out to be 3214 kilometer. 37 degrees south, 37 degree 6 minutes lies in J&K, and 8 degree 4 minutes lies in your state Tamil Nadu near Kanyakumari, right? So it is also given in your figure about the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about approx 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller. As I earlier said, east-west extent is about 2933 kilometer, and north-south extent comes about to be 3214 kilometer, which is basically about approx 300 to 80 kilometers difference. Approx same, you can say. And from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. There is a time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian. You have must about heard about the Indian Standard Time, IST. Indian Standard Times noticed in the standard meridian of India 82 degree 30 east, which is just half of this coastline, because it is starting from 68 degree 7 minutes and ending at 97 degree 25 minutes. So the middle point comes out to be 82 degree 30 minutes east, which passes through Mirzapur in Uttar Pradesh, and it is taken as the standard time for the whole country, so that there is no difference in time zones. If there is not a standard fixed, or if there is no fixed or standard time zone, then the time in Gujarat will be shorter by the time in Arunachal. So to overcome this problem, we have fixed the Indian Standard Time or Standard Meridian of India, right? I hope you are understanding this point. And the Mirzapur is in Uttar Pradesh. One more objective type question: where is, what is the question here comes can come from the point that where is the, what is the standard meridian of India? 82 degree 30 minutes east, and from which point, from which state or which country, or sorry, which city it is passed. So the state is Uttar Pradesh, and the city is Mirzapur, right? The latitudinal extent influences of the duration of the, one more thing, जो latitudinal extent होता है हमारा बच्चों, वो हमारे अफेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलें तो हमारा दिन और रात का बिल्कुल फ़र्क आता है. ये हमने ऑब्ज़र्व भी किया है. अगर आपके कोई रिलेटिव्स साउथ की तरफ रहते हों, या नॉर्थ, अगर हम जैसे नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ में
दिन क्या होते हैं बच्चों, हमारे यहाँ पे जब सर्दियों में हमने देखा है कि दिन हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, छोटे होते हैं, और गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं। बट साउथ में रिवर्स हो जाता है सिस्टम, एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अरुणाचल में आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि अरुणाचल को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। वहाँ पर सन हमारे यहाँ टाइम से पहले निकल जाता है। So it is the difference between the day timing of day and night as one moves from south to north. Now there are just two questions. Why 82 degree 30 east 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India, and what is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? Means कन्याकुमारी में दिन और रात बराबर होते हैं और कश्मीर में ऐसा नहीं होता। कश्मीर में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फिर हम असाइनमेंट में या बाद में डाउट्स में आप इसे क्लियर कर सकते हैं। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड, हाउ इंडिया इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। बच्चों आपको सबको पता है कि हम सभी सपोज एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स रोड्स का, क्योंकि हमारे रोड्स की कनेक्टिविटी है फ्रॉम वन स्टेट टू वन सिटी टू अनदर सिटी, और यू कैन से फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड यू कैन ऑल्सो गो बाय trains and air flights also. If you want to reach earlier, you can take a flight also. Suppose you are going from Delhi to Bangalore, you must take a flight to avoid time delay. But if we want to go to different countries where there is no land connectivity, then we use sea, coastal areas. Sea, we use the land mass of communication, mass of transport of sea. Transportation mode is only sea, or the transportation mode is available flight. But flight is not so economical for the transportation of goods. We can use sea as in the earlier times. बच्चों आपने सुना ही होगा कि पहले फ्लाइट्स नहीं होती थी। फ्लाइट्स से पहले अर्ली टाइम्स में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स चलती थी, और शिप्स के थ्रू ही व्यापार होता था। व्यापार मीन्स बिजनेस हमारा चलता था, और लोग एक दूसरे से दूसरे प्लेस तक जाते थे। तो इंडिया की कनेक्टिविटी का अब पॉइंट ये है हमारा कि हाउ इंडिया इज कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड थ्रू द सी। So the Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. जो इंडियन लैंडमास है, जो हमारा इंडियन पोजीशन है, जो भी हमने बताया डिस्कस करा, उसकी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हम ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाकी एशिया से कनेक्ट होने में या अदर वर्ल्ड से कनेक्ट होने में। एंड इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। साउथवर्ड, साउथ की तरफ एक्सटेंशन है, साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया एशिया का। नॉर्थ और वेस्ट में तो एशिया है, बट इंडिया के नीचे कुछ भी नहीं है। तो इंडिया क्या हुआ, साउथ मोस्ट पॉइंट एक्सटेंशन हो गया किसका, एशिया कॉन्टिनेंट का। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, हमारे वेस्ट में यूरोप है एंड अमेरिका है, ये आपको अच्छे से पता है। और ईस्ट में हमारे चाइना, रशिया तो खैर हमारे से सी के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो चाइना है इधर, ऑस्ट्रेलिया है हमारे ईस्ट में, मलेशिया, ये सब कंट्रीज़ हैं। कंटिनेंट में ऑस्ट्रेलिया आ गया, कंट्रीज़ में मलेशिया आ गया, श्रीलंका हमारे ईस्ट में है। यू कैन से ईस्ट नहीं कह सकते आप, साउथ में बोल सकते हैं श्रीलंका को, कि साउथ में हमारे श्रीलंका है। सो विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया ऑल्सो। एक तो वेस्ट में हो गया यूरोप, और ईस्ट में भी हमारे ईस्ट एशिया की जो फर्दर कंट्रीज हैं उनको भी हम कनेक्ट करते हैं दूसरी तरफ से। प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया, कि जो ईस्ट एशियाई कंट्रीज हैं, और वेस्ट में कौन पड़ा, वेस्ट एशिया थोड़ा सा, और यूरोपियन कंट्रीज, उनके बिल्कुल हम कहाँ पर हैं बच्चों, सेंट्रल पोजिशन में। नाउ नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। जो डेक्कन पेनिनसुला है वो कहाँ पर गिरता है बच्चों, इंडियन ओशन में, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया
वेस्ट एशिया से हमारा कॉन्टैक्ट है, अफ्रीका से कॉन्टैक्ट है, एंड यूरोपियन कंट्रीज से हमारा कनेक्ट है। कहाँ से? फ्रॉम अवर वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्ट में हमारे जो मेन सी पोर्ट्स हैं वो हैं एक तो गुजरात में और हमारे बॉम्बे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हमारे गुजरात एंड बॉम्बे सी पोर्ट्स। गुजरात में कांदला है, सूरत है, दो तीन पोर्ट्स हैं जो बहुत बहुत मेन है हमारे। बॉम्बे पोर्ट है जो हमें कनेक्ट करते हैं बाकी कंट्री से वेस्ट साइड में। एंड thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न में हमारा सबसे मेन पोर्ट जहाँ से आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, डेट इज़ द कलकत्ता। कलकत्ता पोर्ट से, कोलकाता पोर्ट है ईस्ट में, उड़ीसा में पोर्ट्स हैं, विशाखापट्टनम है। ये सब पोर्ट्स हमारे कहाँ पर हैं बच्चों? ईस्ट साइड में, जहाँ से हमारा कनेक्शन होता है साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ और ईस्टर्न एशिया के साथ। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is that India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में, इसीलिए बच्चों उस ओशन का नाम किस लिए रखा गया, किस नाम पे रखा गया? इंडियन ओशन। ओशन एंड सी में बेसिक डिफरेंस क्लियर कर लेना आप बच्चों आप लोग। सी अलग होता है और ओशन अलग होता है। ओशन जोड़ता है कंट्री से कंट्री को, दैट इज कॉल्ड एज द ओशन। And do you know that since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometer, and you can see it in your figure 1.4 that how Suez Canal reduced the difference in kilometers to connect the India